वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट सहेली हनी एंड टेक। आज का डे 2, यहाँ पे मैं आपको वापस एक अलग सिंटैक्स बताऊंगी, बेसिक कैलकुलेशन इन द मैथ्स। सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रिंट कॉर्पोरेट सहेली। यस, दिस इज़ माय चैनल, माय ब्रांड। सो आई विल स्टार्ट विथ प्रिंट कॉर्पोरेट सहेली। यस, वी हैव टाइप द नेम। प्रिंट करना है, पैरेंथेसिस करना है, ब्रैकेट में आपको अपना नाम टाइप करना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेट मी जस्ट जूम अप द स्क्रीन। ओके, नाउ लेट अस ट्राई द डिफरेंट सिंटेक्स। ये मैंने कुछ अमाउंट EMI इज इक्वल टू 50,000। आई एम ट्राइंग टू मेक अ कैलकुलेशन। 12 मंथ्स है, टोटल पेमेंट विल बी वॉट, EMI इंटू मंथ्स। तो मैं चाहती हूँ कि प्रिंट होके आए कि टोटल पेमेंट कितना होगा। सो टोटल पेमेंट कितना है, 60,000। सो यहाँ पे टोटल को मैंने ब्रैकेट में दे दिया, सेमी कॉलम दे दिया है। मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है अगर आप कहीं पे भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि टोटल सेमी कॉलम column and 60,000 rupees. Okay, now let me try some different syntax. So here I have entered the PAN number and I want to show you PAN in a lower format, lower alphabets. So oops, I got some error. Let us just resolve this error. So I am now entering here the right syntax, जहाँ पे मैंने एक PAN number दिया है and I am just asking system to print. So now it is giving me the print is whether it is starting with lower. So print पहले मैंने PAN को lower में कर दिया and then उसको true आ गया है. Okay, the second syntax I am trying to give it in the different format, जहाँ पे मैं आपको वेरिएबल के टाइप्स। सो पाइथन में बेसिकली क्या होता है, मैं पाइथन की जो लैंग्वेज है वो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले इस एरर को सॉल्व करते हैं। So we have solved this error. Print type, okay, so I am giving the number, just asking whether number is a which type. So it is showing me the class is integer type. Print type जहाँ पे मैंने एक strings लिख दिया, hello के बदले आप कुछ और भी लिख सकते हो। It is telling me the strings, okay, and the print type true, it is saying me that it's a bool. So what does it mean? Integer, string and bool. Bool is boolean. Okay, so basically boolean, bool will tell you whether the item is true or false. Okay, string will tell you when there is no numbers, when you have entered the alphabet. So let me go to the VSchool website, which I have used it. I'm still using it whenever I'm getting failed in my syntax, because I am not a regular coder. So I cannot type regular code. So I take a help of VSchool or anything, the AI tool, which help me to decode the bug. Okay, so this is a VSchool which you can it has a complete information what is the meaning of integer, string, boolean. So Python syntax, you can try out these codes also. This is very good website. It is an open source website where you can just use all the codes. You can understand the meaning of it, and see, you can see over here integer, float and meaning. If you scroll down, you can just try these codes also on your own. So I would highly recommend you to use this website as your academic school for Python coding. You can anytime go over here and understand the meaning of the codes. I hope you liked today's video.